Okay, sorry, I am late. Let's start the lecture. So today we are going to start the last topic of our course, signal representation and modeling. So this one is very interesting. So we will try to accumulate all the knowledge that we have obtained so far in this course and then try to apply here in this topic. तो एक्चुअली एक और टॉपिक भी होता है एडवांस एडीएसपी कोर्स में जो कि एस्टिमेशन से रिलेटेड होता है। तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वैसे ही छोटा है और थोड़ी हमारी पेस भी अफेक्टेड रही है, तो वो वाला टॉपिक शायद हम नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम भी वो मैं कवर नहीं कर पाया था, बट आई विल ट्राई कि ये वाला जो टॉपिक है एटलीस्ट इसको जो है हम अच्छे तरीके से कवर कर लें। सो व्हाट इज सिग्नल रिप्रेजेंटेशन मॉडलिंग? सो पहली चीज देखें, लेट्स गो इनटू सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि एक पार्ट है इस कोर्स का। सो सिग्नल प्रोसेसिंग वी हैव टू डील विद टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो आपके पास जो है एक सिग्नल है जिसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस टाइम है, समथिंग लाइक दिस एक्स ऑफ वाई ऑफ टी। तो व्हाट वी डू, वी टेक दिस वाई ऑफ टी एंड वी सैंपल इट, we do sampling, and what do we obtain? We obtain y of n. ठीक है, so y of n is something like this. So this t and n, they are related to each other through so we are assuming that we are following Nyquist theorem के जो आपके y of t है सिग्नल। अच्छा, ये y of t यहाँ पे एक सिंगल डिमेंशनल सिग्नल है। इन जनरल आपके पास ये वाला जो फ्रेमवर्क है, दिस इज एप्लीकेबल टू इमेजेस, दिस इज एप्लीकेबल टू वीडियो, दिस इज एप्लीकेबल टू इवन हायर डिमेंशन सिग्नल्स। ठीक है, तो हर डिमेंशन में हमें जो नाइकिस्ट थ्योरम है उसका ख्याल रखना पड़ता है, जो कि ये कहता है कि आपके वाई ऑफ टी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, आप एटलीस्ट उससे 2 टाइम्स अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखें। सो एफ एस इज इम्पॉर्टेंट हेयर, जो हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। सो यू ऑब्टेन वाई ऑफ एन। सो दिस वाई ऑफ टी, दिस रिप्रेजेंट्स आवर रियल वर्ल्ड। हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स हैं, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल साउंड है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, या कुछ भी हैं जिनको आप कैप्चर करते हैं, दे आर ऑलवेज एनालॉग सिग्नल्स, बट we cannot process them in computer. So what we need to do, we sample them, we obtain what we call them discrete time signals. So this one is not digital signal, rather discrete time signal. So the benefit of using discrete time signals is we can manipulate them, we can filter them, we can remove noise, we can decrease their dimension, we can do estimation, we can do detection in computers. Okay, so this is a revolution caused by sampling, that we can take our data or our signals directly into the computer, and then we can do all the things that we can even imagine on these data points. So this y of n, we can store it in a vector y. So that will be, so we take from y of 0, if we are in causal world, y of 1, till we have y of m minus 1, such that this is our m cross 1 vector. Okay, now this y of n is representing some real world phenomena. So this could be reading of a thermometer, this could be reading of a flow sensor or something else. और आपने इस y of n को यूज करके आपने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एस्टिमेट करना है, या आपने फ्लो एस्टिमेट करना है, या आपने फोर्स एस्टिमेट करनी है, या आपने ओरिएंटेशन या पोजीशन या व्हाटएवर यू कैन थिंक related to that real world phenomenon. So what you will do, you will take this y, you will, in the first step, you will try to obtain its good representation. That is our x. So this box is responsible for obtaining a good
representation of y. Okay, so this box is responsible for obtaining a good representation. So let's keep this good in quote unquote. What do we mean by good? So that is very subjective. So so this block is, of course, we will be representing it with our A matrix जो हम use करते रहे हमारे जो framework में था. This X will be n cross 1, A will be m cross n. ठीक है, m times n. Now, what do I mean by representation? So you can argue that your signal is already in a good representation. For example, you have this vector form. You can work with this form. Why do you need X? Why do you need X? So it can happen that your original signal, which has its representation as a function of time, may not be a good representation. It depends on, actually, it all depends on application. For example, if I have to do something that we call denoising. So denoising is operation where your y of n may be corrupted with some noise. Okay, so that is the thing that you get as a collective thing, and you want to remove this component. You want to remove this component before you are able to process your y of n. Okay, so in this case, what we would like that our representation should efficiently separate this y of n from this noise. It should give us some more information about y of n as compared to our noise. Then there could be a lot of tasks. For example, compression. So what you do in compression? For example, in your mobile phones, your audio, video, or anything that you transmit from your mobile phone to some other friend or family or any other point, your data, which could be audio, video, or text, is first compressed. Compressed means your data usually, so y is usually very large, 10 to the power 7 or 8 in this dimension. So you take this y, you pass it through a block, okay, and the output of this block gives you a very compact representation. And this compact representation is transmitted instead of y. Why? Because we have very low bandwidth allocated to us. We cannot transmit this huge amount of bits. So we have to first compress it and then transmit it. On the receiving side, you have an opposite operation, which takes the received signal. First, it decompresses it and then recovers the audio or video or text, whatever there is. Okay, so this is always happening in communication systems, compression task. So similarly, you can go on classification, regression. There are so many tasks which need a very good representation. So the point is, your existing data may not be in a good form, or what do we say, in a good representation. Before you are actually able to do the task for which you are going to design your system, you have to find a very clear and good representation represented here as X. So how do we do that? But first, let's see what do we mean by good representation. So I have Y. So this was just for the sake of motivation. So now what I have Y. I pass this Y through a block and I obtain X. Okay. So I will call this Y as my original data or original signal.
and this is my transformed data or transformed signal or converted signal. Okay, so let's simply call it transformed signal. And here in the middle of it, this is our sort of a linear operation represented in the form of matrix, जो कि हमें y को convert करके देता है किसमें, x में. Okay, so don't think like this that ay is equal to x. No, it is not like that. ठीक है, अभी मैं उसको ऑपरेशन बताता हूँ. This diagram does not mean ay is equal to x, so don't go in that direction. Okay, so this block often we call it dictionary. ठीक है, सो आपके पास ए जो है, ए के कॉलम्स होंगे. सो ए इज इन दिस फॉर्म a1 a2 till an. सो ए के आपके पास कॉलम्स हैं एंड ईच कॉलम ऑफ ai is called atom. So the equivalence is from real world dictionary. Okay, what you are going to do, you are going to make a sentence, which in this case is y, using words which are atoms of dictionary, which is a here in our case. ठीक है. So what is a good dictionary? Which gives us a good representation. So if I talk about a good dictionary, what do we mean by good? What do we mean by good? So there are some measures, although people have varying definitions of good representation, but some 2 to 3 things which are consistent, we can highlight them here. So first thing is related to what we call norm of our, or the energy of our representation. So for example, if you take y and using some dictionary D or A, you get its representation x. Then this y has some energy in its original domain. उस energy को हम कैसे represent करेंगे? We know that norm of this vector, the norm of this vector tells us about the size or energy of this vector. ठीक है, और इसी तरीके से जो आपके पास x आएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? Norm of that x. If we use simply L2 norm, तो ये हमारे पास इस तरीके से. So first thing, a good dictionary or a good matrix A should satisfy is that the given this norm is bounded, given y2 norm is bounded, means it is less than infinity, your x2 norm should also be bounded. ठीक है, मतलब कि आप अगर एक फिनाइट एनर्जी सिग्नल ले रहे हैं इनपुट पे, तो आपकी डिक्शनरी ऐसी ना हो, या आपका जो मैट्रिक्स ए है वो इस तरह का ना हो कि आपको एक इनफिनाइट नॉर्म का सिग्नल आउटपुट कर दे. दैट विल बी यूजलेस फॉर कंप्यूटर टू प्रोसेस. So this is the first definition of being good. ठीक है, so now let's move to second thing. So second thing is something which is related to distinction between two very short time bursts. Okay, so since our data is in time domain, so I will motivate this thing using analog domain. So suppose you have a signal which is like this. So this is some burst of energy, then it is 0 here, and then you have another burst which starts from this point and then decays to 0 gradually. Now
it can happen that when I sample it, I obtain the white and I look for compute such that I am able to differentiate between this bus and this bus. अगर आप फोरियर लेंगे so I am hopeful all of us Risha Kushwaha सर आपकी आवाज़ बहुत इट्स मोर लाइक जैसे आपके माइक्रोफोन के ऊपर कोई कुछ आया और इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही. is it the problem with everyone या सिर्फ ईशा के साथ है सर सबको हो रही है. मेरे पास तो मेरी आवाज सही आ रही है सर अब सही आ रही है. वो बीच में जब आपने ए ब्लॉक बना रहे थे ना जब पे सी हो. अच्छा चलें फिर मसला हो तो मुझे बताइएगा मैंने असल में वो हेडफोन भी लगाए हुए हैं ना साथ साथ तो मुझे तो सही आ रही है okay so we need to differentiate between these two bursts the issue is we all know that this burst this smaller one अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसीज कहां से कहां तक होंगी who is going to tell me this burst is in time domain very localized तो इसकी फ्रीक्वेंसीज कहां से कहां तक होंगी all the people who have studied signals and systems or DSP and or DSP answers फैजान बताओ Sir, minus infinity to infinity. minus infinity to infinity why सर इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सिंक होता है तो सिंक इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. बिल्कुल वेरी गुड जो चीज टाइम में लोकलाइज्ड है वो फ्रीक्वेंसी में जो है वो लोकलाइज्ड हो ही नहीं सकती ठीक है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड इन्फिनाइट फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है आपका जो आप सिग्नल एंड सिस्टम में सीखते हैं इसको ऐसे देख लें कि अगर ये डिराक डेल्टा हो तो आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी अगर आप इसकी विड्थ को कम करते जाएं आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो जो सिंक है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी ठीक है सो दैट इज वन प्रॉब्लम कि अगर आपके डेटा के अंदर या आपके सिग्नल के अंदर इस तरह का कोई टाइम बर्स्ट है छोटा सा तो आप अगर फोरियर यूज करेंगे तो वो तो उसको फैला देगा अपनी डोमेन में ठीक है तो यू कैन नॉट यूज फोरियर टू डिफरेंशिएट दिस बर्स्ट विद जस्ट द नेक्स्ट थिंग जो कि आपके आगे एक्सपोनेंशियल डिके है वो आपका सारा कुछ मिक्स हो जाएगा इन दोनों का एवरेज आपको फोरियर दे देगा यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो है वो किसका है पहले वाले बर्स्ट का है या एक्सपोनेंशियल डिके का ठीक है सो दैट इज वन प्रॉब्लम सो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स कि आपके पास जो है वो टाइम डोमेन में अगर कोई दो चीजें आ रही हैं जो कि बहुत कॉम्पैक्टली लोकेटेड हैं your representation should be able to differentiate between them now its opposite is also true अब देखिए अगर आपके पास जो है वो इस तरह की कोई चीज आ जाती है टाइम डोमेन में if you have something like this what will be in frequency domain जी इसका frequency domain क्या होगा कौन बताएगा मुझे so I have a sinusoid from minus infinity to infinity what is its frequency domain come on Mars सर इम्पल्स होगी मतलब इम्पल्स होगी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ठीक है और मैं थोड़ी सी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करके इसमें ऐड कर दूं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करके ऐड कर दूं तो फिर मेरे पास एक और इम्पल्स आ जाएगी जो कि यहाँ पे होगी नाउ ये जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू दिस इज डेल्टा एफ ठीक है यहाँ पे ये चीज थी डेल्टा टी ये चीज डेल्टा टी थी ये डेल्टा एफ है ठीक है नाउ आई आल्सो वांट माय रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू इंपल्सेस अगर मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो your original data can be in any domain right so my dictionary or my A matrix should be such that it must be able to differentiate between time bursts as well as
it must be able to differentiate between frequency bursts. तो हम यहाँ पे इन दोनों को frequency burst कह रहे हैं. But it happens कि this delta t and this delta f, you cannot achieve this resolution. मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम डोमेन में भी कोई चीज जो बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है, which is represented by delta t, उसको भी डिफरेंशिएट करें arbitrarily और delta f को भी करें, you cannot achieve that at the same time. The reason is we have what we call Heisenberg uncertainty principle, कि अगर आप एक चीज को छोटा करेंगे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अगर आप डेल्टा टी को छोटा करेंगे आपकी डेल्टा एफ जो है वो खराब हो जाएगी. So there is a limit on this product. That limit is guided by this constant 1/4 pi. तो अगर आप डेल्टा टी को छोटा करेंगे तो डेल्टा एफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा to keep this thing in the bound 1/4 pi. Similarly, vice versa. So you cannot achieve that. So the search is always going on to look for a matrix, a dictionary, or something else which gives us the opportunity to choose this delta t and delta f arbitrarily, but we have not been succeeded. There are some good dictionaries which as compared to Fourier behave very good in terms of delta t and delta f. The third property is actually related to what we call compactness. ठीक है, और sparsity. Compactness or sparsity. So this is very important. So you take your y and you want to find a dictionary A or D, whatever you call it, such that it provides you with a representation X, a transformed signal X. So our goal is to obtain an X whose L0 norm is minimum. Why? Can anyone tell me the reason behind this? That why do we want an X whose L0 norm should be minimum? Come on. Shweb? सर उसकी एनर्जी कम होगी. एनर्जी तो हमने बाउंडेड रखनी है, उसके अलावा कोई चीज बताएं. मास. सर वो स्पार्सिटी रिलेट करते हैं ना एनजीओ नॉर्म से, मतलब कि स्पार्स सॉल्यूशंस. But how will it benefit us? How will it benefit us? Why I cannot work with y? Why I am seeking for the representation X which is sparse? Rabia? I think इसलिए सर कि हमें सॉल्व करना आता है. So we can also solve for x1, we can also solve for x2. Mohsin, बताओ. सर डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करने के लिए. Exactly, that is the reason. देखें if y जो है वो मेरे पास m क्रॉस 1 का वेक्टर है, ठीक है, और मैं उससे एक ऐसा x ऑब्टेन कर लेता हूँ. So this is n क्रॉस 1 vector, but I am always sure that sport of this x is always less than equal to k naught, which is less than n. ठीक है, which is less than n and also less than m. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरा y जो है वो ऐसे पड़ा हुआ था, ये सारे उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो उससे जो मेरे पास अब x आया है, तो x में बहुत ज्यादा जीरोस पड़ी हुई हैं. कहीं कहीं पे जो है आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, फिर जीरोस हैं. अब ये कहीं पे भी हो सकता है. ये सिंपल मैंने एक जो है वो एग्जांपल सी बनाई है. तो ये सारे जीरोस हैं, ये भी जीरोस हैं, ये आपके थोड़े से एलिमेंट हैं जो नॉन जीरोस हैं. अब इसका एडवांटेज देखें. दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन.
आपने अगर y और x में 1-to-1 equivalence है कि given y you can obtain x, given x you can always go back to y, so it will be much more beneficial to work with x as compared to y. आप अपने जो एल्गोरिदम्स हैं कुछ भी हैं उनको बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज दिस इज आल्सो बेनिफिशियल. सो in terms of bandwidth consumption, अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है you can always save your bandwidth. So this is much more beneficial as compared to कि आप एक dense vector के साथ deal करें. So this y is called dense representation, ठीक है. And this x which has very few non-zero elements is called sparse representation. Hopefully this point is clear, ठीक है. So we always seek a dictionary A which gives us a sparse representation that is much more beneficial as compared to a dense representation. So these are some motivations कि आप जो है वो एक good matrix या एक good जो आपके पास डिक्शनरी है उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं. यहां तक कोई सवाल बिफोर वी प्रोसीड? Okay, so then we have types of dictionaries. So we have types of dictionaries. ठीक है. So we have our original signal or data in y vector. We are looking for a dictionary D or A, whatever you call it. Let's use A क्योंकि हम A को ही use करते आए हैं. Or we can use D because D is related to dictionary. And then we get X, a new transformation of Y. Okay. Now, this means given Y and D, I have to find X. So Y is known to me. This is known. D, at the moment, let's assume this is known. This is what we seek. This is unknown. So that is the meaning of this diagram. कि आपका जो y है, that is equal to D, which is matrix multiplied by X. So in general, y will be m cross 1. D will be m cross n. And X will be n cross 1 in general. ठीक है. So shortly we will see a type of dictionary जिसमें m will be equal to n. So the problem is, given D and Y, you have to find X. We know everything about the system of equation. हमने जो पिछले 3 महीनों में या 2 महीनों में पढ़ा है, we have studied the system of equation in detail. हमें पता है कि कब X exist करेगा, कब X और Y में 1-to-1 equivalence होगी, कब नहीं होगी. ठीक है. Given Y, how can we minimize the error if there is some error? We know everything about the system of equation. So we can directly apply that knowledge here in this problem. That is, given y, we need to find its good representation x. Okay, so this is direct application of what we have studied so far. Another topic that unfortunately we will not be able to cover this here, that is also a direct representation of this thing dx is equal to y. That is related to system modeling या estimation, जिसमें आप जो है वो सारा कुछ regression और classification, whatever you define it, but from the point of view of linear algebra. Okay, so let's focus here at the moment. Now, first type of dictionary that we are going to use is what we called orthogonal dictionaries or orthonormal dictionaries. The first type, orthonormal dictionaries. So
I have columns of D. So D is equal to like this. So let's use its column as phi 1, phi 2, and then I have phi n. So each phi I is also n cross 1, such that this matrix is n cross n. M is equal to n. And every column is orthogonal to every other column. So phi I is orthogonal to phi j. Phi I is orthogonal to phi j. And since it is orthonormal, we also assume that the norm of every column, L2 norm, is equal to 1. कि आपके जो columns हैं D के, they are normalized. ठीक है? Now given this D, we need to find x, and given x we need to find y. So हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले y होगा. So using some operator we will find x, and using some another operator we will find y. So this operator is called analysis operator, and this will be called synthesis operator. Given y, you will be using an analysis operator to obtain x, and given x, you will be using a synthesis operator to go back to y. ठीक है? Now, if y is equal to, if I use synthesis operator as d, then y is equal to dx. Y is equal to dx. We know that y is being synthesized as linear combination of columns of this vector. Okay, so we have this matrix, sorry, I is equal to 1 to n xi phi I. Okay, y is equal to dx xi phi I. So here y is being synthesized as linear combination of columns of dictionary. The weights of these linear combinations, वो कहाँ पे हैं? वो आपके x vector में है. So x vector is called representation of y in the range, in the space which is spanned by columns of D. ठीक है, तो आप y को y किधर लाई कर रहा होगा? एक वेक्टर स्पेस में. दिस वेक्टर स्पेस विल बी रेंज स्पेस ऑफ D. तो आप इसके अंदर कुछ बेसिस हैं और आप y को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस बेसिस. Okay, so D is our synthesis operator, analysis operator. How about synthesis operator? So I need to find x. I need to find x using a different operator. Let's call it D tilde, which operates on y. Okay. So D tilde is an operator which gives me x given y. Okay. So any idea how do I find D tilde, or what will be D tilde equal to? हमारा स्पेसिस का नॉलेज हमें पता है कि अगर यहाँ पे x पड़ा हुआ था तो x से अगर मैं रेंज स्पेस में जा रहा था और आई वाज यूजिंग d, तो वापस मुझे इधर आने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? d का एडजॉइंट यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस d tilde विल बी एसेंशियली इक्वल टू एडजॉइंट. x is equal to d adjoint y. अब ये वो सारे कंसेप्ट हैं जो स्कैटर्डली हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हैं.
Okay, so it means x will be equal to d adjoint, और matrices के केस में adjoint किसके इक्वल होता है आफाक? Matrices के केस में, so you can type your answer in the chat box. I can see. Matrices के केस में जो adjoint है that is equal to its Timosen, yes, transpose. Exactly. Why question mark? It is equal to its transpose. तो यहाँ पे जब मैं ऊपर स्टैटिक लिख रहा हूँ it means transpose. लेकिन y का मुझे पता है that is equal to dx. तो this is equal to y. ठीक है? So if I want x to be equal to x, what should be d adjoint into d equal to? ये किसके इक्वल होना चाहिए? ईशा? Identity. Identity. Exactly. I n cross n. This must be identity. Means d adjoint must be equal to d inverse. D adjoint must be equal to D inverse. But since our D is a special type of matrix, ये देखें कि उसके जो columns हैं वो एक दूसरे के orthogonal हैं. For such type of matrices which are unitary matrices, we know that its inverse is equal to its transpose. Its inverse is equal to its transpose. So at the end, my x will be equal to D. अच्छा D यहाँ पे complex भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज की जगह लेट्स यूज हर्मिशियन ट्रांसपोज. यहाँ पे हर्मिशियन ट्रांसपोज यूज करते हैं. सो एट द एंड x विल बी इक्वल टू d हर्मिशियन ट्रांसपोज इनटू d इनटू x. सो दिस इज माय y, दिस पोर्शन इज माय y. तो इस एक सिंगल इक्वेशन के अंदर आपके पास दोनों ऑपरेटर्स आ गए, सिंथेसिस भी और एनालिसिस भी, इनसाइड दिस सिंगल इक्वेशन. और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हमने अपने जो लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज है उसको यूज करके हमने x जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन फाइंड की है, प्रोवाइडेड d इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड d इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. नाउ आई कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन in the form of summation. So in summation form we can write, since we know how to manipulate this thing d Hermitian d, तो हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन i goes from 1 to n. ठीक है, जो dx है उसका हमें पता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. Sir, we can't hear you.
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी जी, वो इंटरनेट का कभी होता है, बट इट्स रियली अनोइंग। सो कहाँ तक हमने ये कर लिया था कि x इज इक्वल टू डी हर्मिशियन इनटू y, राइट? तो now my synthesis operator here is d Hermitian. So how I'm going to interpret this thing, d Hermitian into y? So that is nothing but your every xi is equal to inner product with ith column of d, ठीक है, ith column of d and y. जब आप ट्रांसपोज करके लिखते हैं तो फिर कॉलम और गिवन वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हो जाता है, जब सिंपली लिखते हैं तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन कैसे होगा? सो इट विल बी डिफाइंड लाइक दिस, सो दिस विल बी phi I Hermitian, सिंपल ट्रांसपोज नहीं, इनटू y, phi I Hermitian इनटू y हो जाएगा, सिंपली ट्रांसपोज नहीं होगा क्योंकि वो d का हर्मिशियन है। ठीक है जी, तो लेट्स समराइज इट on next slide. So given y, you find x using d Hermitian into y, where every ith entry is inner product of ith column of this d and y. Given this x, you go back to y using d. That is the loop. ठीक है, so that is the loop. Now we can write that representation जिसको मैं पहले लिखने की कोशिश कर रहा था. So that is equal to, so x must be equal to d Hermitian into y. So this is equal to d Hermitian into y की जगह आप क्या करेंगे? y की जगह आ जाएगा d into x. और फिर इसको जब आप समेशन की फॉर्म में ओपन करेंगे, सो एक्स आई इज इनर प्रोडक्ट, तो एक्स आई की जगह मैं क्या करता हूँ? आई इज इक्वल टू 1 to n, इनर प्रोडक्ट डाल देता हूँ बिटवीन फाई आई एंड वाई, ये एक्स आई बन गया, ठीक है। और फिर बाद में क्या है? फाई आई, दैट इज माई कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है सिंपल इसी इक्वेशन के अंदर, और आपकी जितनी भी ट्रांसफॉर्म थ्योरी है वो यहीं से निकलती है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? सो y आपके पास एक वेक्टर है और आपके पास एक डिक्शनरी है जिसके डिफरेंट कॉलम्स हैं, phi 1 है, phi 2 है, एंड सो ऑन टिल phi n। ये एक वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं विच इज रेंज स्पेस ऑफ योर डिक्शनरी। आप y का हर phi के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। आप ये इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो है y का प्रोजेक्शन आ जाता है, जो कि जब y की सिमिलैरिटी आ जाती है विद दैट कॉलम x1 x2 और एंड पे क्या आएगा? इक्वल टू xn। दिस इज योर x which is representation of your signal or data y, ठीक है, in terms of range space of your dictionary। यहाँ तक कोई सवाल? ये क्लियर है चीजें? ये फॉर्मुलेशन स्पेशली दिस मस्ट बी क्लियर। आई कैन रिपीट क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो जब इंटरनेट गया था तो वो किस तरह की डिसरप्शन आई थी। ठीक है जी, ओके। सो इफ इट इज, अगर ये चीज आप लोगों ने समझ ली है तो नाउ लेट मी आस्क समथिंग। अब क्या करते हैं? नाउ लेट्स ट्रंकेट दिस डिक्शनरी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो डी के कॉलम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं,
instead of using all columns of D, let's use only few columns. Okay, so how will that work? So truncation in orthonormal matrix or orthonormal dictionary. जी नाजिश. सर जो आपने अभी ब्लॉक किया है x इक्वल्स समेशन वाला, वो y इक्वल्स नहीं होना चाहिए था? एक मिनट. हाँ जी, सही कह रही हैं आप, क्योंकि वो जो ट्रांसपोज है वो इस तरीके से, अगर मैं फाई आई को इधर लिख रहा हूँ तो वो बाद में आएगा. सो आई कैन सिंपली करेक्ट इट हियर. ठीक है, थैंक यू. तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू d इंटू एक्स. ठीक है, ये d हो जाएगा, ये d हर्मिशियन, और x की जगह आप d हर्मिशियन y डाल देंगे. नाउ दिस इज राइट. अब ठीक है ये, क्योंकि हर्मिशियन बाद में आया हुआ था. ठीक है जी. तो yes, that is correct. So let's see how does this truncation works in orthonormal dictionaries. So instead of using D, so D is n cross n. Instead of using D, let's use something else, which is m cross n. तो इसको कह देते हैं d hat, such that m is larger than n. M is larger than n. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नाउ व्हेन यू विल बी फॉर्मिंग y, पहले आप y बना रहे थे ऐसे, y वाज इक्वल टू dx, ये पहले बना रहे थे. अब हो जाएगा y hat will be equal to d hat into x hat. y hat is equal to d hat into x hat. वो यहाँ पे y है m cross 1, d hat is m cross n, and x hat is n cross 1. ठीक है, and we know that m is larger than n, means कि our dictionary is tall matrix. Okay. Now, if I use same procedure to find x hat, I will be getting d hat. x hat की जगह क्या आ जाएगा? तो एनालिसिस ऑपरेटर जो है वो बन जाएगा अब d hat into its adjoint, जैसे हमने पहले किया था, into y. ये बन जाएगा. So this thing is equal to x hat. ठीक है. Now there will be difference between y and y hat. y और y hat में difference होगा, that will be our y error vector. क्यों? क्योंकि आपका y जो है वो m cross 1 है, x is n cross 1, n is smaller than m. आप एक बड़ी स्पेस से छोटी स्पेस में जा रहे हैं. all the things that we studied for tall matrices, ठीक है, they are going to apply here. अब जो आपका y है वो in general d hat की रेंज स्पेस में लाई नहीं करेगा, तो आपको y पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा उसकी रेंज स्पेस के अंदर. उस प्रोजेक्शन में कुछ एरर होगी, that error is y minus y hat. So only one portion of y, which is y hat here, can be represented as linear combination of columns of D matrix. ठीक है? Now what I want to do, I want to minimize this error. We want
that the size of this error should be minimum. This should be minimum. This should be minimum. So if we want this should be minimum, then what should be my D adjoint here? That is a question. At the end given, देखिए हमें पता है कि D hat हमारे पास D hat जो है वो हमें known है. So this thing is known. ठीक है? Given D hat, what will be D hat adjoint in this case if I want error to be minimum? कौन बताएगा मुझे? जी मोहसिन. तो लेफ्ट सूडो इनवर्स की फॉर्म में आप डी को लिखते हैं. एग्जैक्टली बताओ ना. ओके लेफ्ट सूडो इनवर्स ऑफ व्हाट? सर डी हर्मिशन डी इनवर्स और डी हर्मिशन. वो मुझे पता है, मैं लिख लूंगा. लेफ्ट सूडो इनवर्स किस चीज का? सर डी का. डी तो है नहीं मेरे पास. डी डी है हैट सॉरी. जी. वेरी गुड. दैट विल बी माय डी हैट एडजॉइंट. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू डी हैट Hermitian transpose into D hat whole inverse into D hat Hermitian transpose. If I select this D hat adjoint, then I am sure that my L2 norm is minimized. This is I am sure. कैसे sure है? यही theory है जो हम पढ़ के आए हैं सारी. So we do not need to repeat each and every concept again and again. तो जो लीनियर अलजेब्रा में हमने चीजें पढ़ी हैं वो डायरेक्टली एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी जब आप ट्रंकेशन करेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर. क्लियर है ये पॉइंट? आई कैन रिपीट अगर किसी को कोई मसला है यहाँ पे तो. जी रबिया. सर मैंने बस पूछना था कि हमारा जो एक्चुअल वाई है उसका साइज डिफरेंट नहीं है वाई हैट से? जो हमारा एक्चुअल वाई है, हमारा जो एक्चुअल वाई है वो भी m क्रॉस 1 है. जो वाई हैट है वो भी m क्रॉस 1 है. डिफरेंस ये है. गुड क्वेश्चन. ये देखिए आपके पास ओरिजिनल वाई था इस तरीके से. सो इट वाज m क्रॉस 1. तो इसकी जो इन जनरल m एंट्रीज थी और सारी की सारी नॉन जीरोस थी. ठीक है. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम कि आपके पास जो रेंज स्पेस थी, रेंज स्पेस ऑफ डी, उसका डायमेंशन था सिंपली n और n वाज लेस देन m. तो आपने एक m डायमेंशनल वेक्टर को पकड़ा और उसको प्रोजेक्ट कर दिया ऑन टू दिस n डायमेंशनल स्पेस. उससे हुआ क्या? उससे जो आपके पास y हैट बना है ना वो ऐसे बना है कि उसकी पहली n एंट्रीज तो हैं लेकिन आखिरी m माइनस n एंट्रीज क्या हैं? वो जीरोस हैं. ठीक है. आखिरी m माइनस n एंट्री जीरोस हैं बिकॉज you cannot represent them using, अगर मैं उनको एक ऑर्डरली फैशन में रख लूं तो you cannot represent them in n dimensional space. ये ऐसे ही है कि आपके पास अगर y 3 dimension में था और आपके पास जो है जो रेंज स्पेस ऑफ d थी वो 2 dimensional है. तो जब आप y को प्रोजेक्ट करेंगे ऑन टू 2 dimensional space तो इट विल ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ x, y एंड 0. क्लियर है ये पॉइंट रबिया? जी सर. ओके. गुड पॉइंट. अच्छा अब ये देखें. अच्छा अब मुझे बताओ, कौन बताएगा? शैला बेटा आप बताओ, ये जो चीज है व्हाट इज दिस थिंग?
ये क्या चीज है? सर आइडेंटिटी ओके नहीं वेट, नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है, थिंक ऑन दोज लाइंस। अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर ये क्या है? सर नहीं, बल्कि वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना, जो उसका लेफ्ट सूडो इनवर्स है। बल्कि से इनमें ये से एक आइडेंटिटी है, एक कुछ और है। एक आइडेंटिटी नहीं होगी। हाँ वो क्या है? Who is going to tell me? ये वो चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के आए हैं, उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने उसको सिर्फ थ्योरी में देखा है, अब उसकी एप्लीकेशन है। हाँ जी नाजिश आप बताओ। प्रोजेक्शन है। कौन सा वाला प्रोजेक्शन है, पहले वाला या दूसरे वाला? y का है इन y डैश नहीं इसकी जो बात y कर हैट रही हो, इस चीज की या दूसरी वाले की? दो चीजें हैं। नहीं, जो d हैट इनटू d एडजॉइंट हैड इन एडजॉइंट है, वो प्रोजेक्शन है। गुड, दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, कहाँ से? H2 से ऑन टू रेंज स्पेस ऑफ D। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? दूसरा आइडेंटिटी होगी। होगी या है? कैसे प्रूव इट? क्योंकि वो लेफ्ट सूडो इनवर्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो d हर्मिशियन इनटू d का इनवर्स है, इनटू d हर्मिशियन इनटू d है, तो आइडेंटिटी होगा। गुड, और इसका साइज क्या होगा? n क्रॉस n। n क्रॉस n। ठीक है, तो एक चीज जो है वो प्रोजेक्शन है, दूसरी चीज क्या है? वो आइडेंटिटी है। बिल्कुल यही चीजें हमने पढ़ी थी जब हम अपने वेक्टर स्पेसेस में पढ़ रहे थे। तो अगर आप लेफ्ट सूडो इनवर्स को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड से तो आइडेंटिटी होगी, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोजेक्शन होगा। अब जो आपके पास अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती, इफ m वाज इक्वल टू n, अगर m n के इक्वल होता तो फिर क्या होता? फिर आपके पास दोनों आइडेंटिटी होते, डी डी इनवर्स इक्वल टू डी इनवर्स डी इक्वल टू आइडेंटिटी। उस केस में आपके पास दोनों चीजें आइडेंटिटी होती। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड कि अगर आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल डिक्शनरी हो। So based on same concepts, what we can do, we can generalize, limit ourselves to only orthonormal dictionaries. देखिए यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने कहा था कि मेरे पास जो D है, its columns are orthogonal to each other. ये वाला assumption लिया हुआ था, this assumption. But we can relax this assumption. ठीक है, हम इस assumption को रिलैक्स कर सकते हैं। उसकी मोटिवेशन क्या है? तो उसकी मोटिवेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक डायमेंशन में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दो डायमेंशन के अंदर हैं, सो इफ यू आर इन टू डायमेंशंस, इफ योर n इज इक्वल टू 2, देन अगर आप एक कॉलम फिक्स कर दें, इफ दिस इज phi 1, then there is only one possibility to choose phi 2 in case of orthonormal dictionary. ठीक है, तो फिर d इक्वल टू phi 1 अगर मैं फिक्स कर दूं तो phi 2 चूज करने की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि मेरे पास चॉइसेस टू मेक दिस डिक्शनरी फॉर टू डायमेंशनल सिग्नल्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। लेकिन अगर मैं जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी को हटा दूं, यहाँ से ऑर्थोगोनैलिटी को हटा दूं और मैं कहता हूं कि अच्छा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी आई यूज लीनियर इंडिपेंडेंस, linear independence as my measure. ठीक है, सो ऑर्थोगोनैलिटी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर हैं। तो उस केस में इन ऑर्डर टू चूज phi 2 आई हैव सो मेनी चॉइसेस, I have so many choices to choose phi 2, so I can construct my dictionary in many ways.
सिर्फ मैंने एक चीज का ख्याल रखना है कि phi1 और phi2 should not be linearly dependent, कि इनका अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूं, इनको मैंने ऐसे चूज करना है कि इनका इनर प्रोडक्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो फिर क्या मसला होगा? व्हाट कुड बी द इशू अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए? मोहसिन आप बताओ। Sir, I don't remember. ओके, एनीवन एल्स? ईशा आप बताएं। व्हाई सर आर यू? लिनियरली डिपेंडेंट के केस के अंदर हमारे पास बस सिंपली उसकी डायमेंशन ही एक तरह की ज़्यादा आ रही होगी। व्हाट कुड बी द इशू? वो बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब्दुल्ला है नहीं? अब्दुल्ला नहीं है आज। माज आप बताओ। सर क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं लगी। क्वेश्चन ये है कि जब मैं पिछले केसेस में एक वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहा था तो उसमें मैंने phi1 और phi2 को ऑर्थोगोनली चूज किया। अब मैं उस कंडीशन को रिलैक्स कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग देम ऑर्थोगोनली आई सिंपली put a condition of linear independence on them. As far as they are linearly independent, I'm good to go. The question is, why do I put this condition of linear independence? सर आई थिंक वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाए। Exactly, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे तो आप दो डायमेंशनल स्पेस बनाना चाहते हैं जिसका एक डायमेंशन phi1 होगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो phi2 भी बिल्कुल उसी डायमेंशन में लाई कर रहा होगा कहीं पे, इस तरीके से। तो इंस्टेड आपके पास एक सिंगल डायमेंशनल स्पेस हो जाएगी। और जब आप वो इनवर्स कंप्यूट करेंगे अपने सूडो इनवर्सेस में, दे विल नो मोर बी कंप्यूटेबल, क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो जाएंगे, जो कि अभी मैं आगे जाके बताता भी हूँ आपको। ओके, so these types of dictionaries are called bi-orthogonal. Bi-orthogonal dictionaries पहले क्या थी हमारे पास? orthogonal dictionaries, अब हम bi-orthogonal. So the concept is we can relax orthogonality, but we have to use then two dictionaries. अभी तक क्या था? अभी देखें पिछले केस में मेरे पास D था तो उसी के ट्रांसपोज से मैंने जो है उसका एनालिसिस ऑपरेटर बना लिया था। अब उस चीज को मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा? लेट्स सी। सो सपोज आई हैव अ डिक्शनरी D which is again n cross n, ट्रंकेशन एंड पे देखेंगे। So it is n cross n, we have phi1, phi2 till phi n. ठीक है, each phi I is r to the power n cross 1 and phi I is linearly independent of phi j, linearly independent of phi j। अब मैं ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन यहाँ पे इम्पोज नहीं कर रहा। इफ दे आर linearly independent, that is okay for my basis, मैं उससे एक वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकता हूँ। Okay, so now for any y, so for any y which is again n dimensional, we can write y as linear combination of columns of this dictionary dx. That is my synthesis. If I expand it using summation, this becomes I is equal to 1 to n xi phi I. ठीक है, so that is linear combination of columns of this dictionary D.
For analysis, let's use something else. So let's use d tilde into y. D tilde into y. So that now we are sure that y is equal to, okay, so d tilde into y की जगह हम डाल देते हैं d x जो कि इसकी वैल्यू, ठीक है. Now if I want this x to be equal to x, what should be this d tilde into d? ये किसके इक्वल होना चाहिए? हाँ जी मोहसिन. Identity. Identity, of course this must be equal to identity. This must be equal to identity. तो अगर ये आइडेंटिटी की इक्वल है तो डी टिल्डे किसके इक्वल होना चाहिए फिर? इक्वल टू D inverse. D inverse. But now I cannot say that D inverse is equal to D transpose. No, that is no more valid here. That is no more valid here because D is no more a unitary matrix or orthogonal matrix. उसके columns एक दूसरे के orthogonal नहीं हैं. They are simply linearly independent columns. ठीक है. So using two different matrices, so अब हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास y है तो y से मेरे पास x आ रहा है using d inverse. This is my analysis operator. और x से y में जाने के लिए I am using d. That is my synthesis operator. तो in general you cannot obtain d inverse from d. तो अब आपको दो matrices use करने पड़ रहे हैं. That is the cost that you are paying in case of bi-orthogonal dictionaries. पिछले केस में हमारे पास एक ही मैट्रिक्स था, हम उसके ट्रांसपोज से काम चला रहे थे कि हम जो है एक को एनालिसिस के लिए यूज कर रहे थे, दूसरे को सिंथेसिस के लिए यूज कर रहे थे, मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को. लेकिन अगर हम वो ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशंस को रिलैक्स कर दें तो फिर हमें दो मैट्रिसेस चाहिए होंगे, एक एनालिसिस के लिए और एक दूसरा सिंथेसिस के लिए. ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड बाई ऑर्थोगोनल. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स इट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द कॉलम्स ऑफ डी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे डी विल ऑलवेज बी फुल रैंक मैट्रिक्स. फुल रैंक मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा. सो एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है. ओके, सो what else we can say about this thing? ये जो हमने लिखा हुआ है कि d tilde into d is equal to identity, इसका क्या मतलब है? मैं वो जो बाई ऑर्थोगोनल का लफ्ज है ना, उसको मैं वो करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो उसमें ऑर्थोगोनल क्यों यूज हो रहा है. कोई मुझे बता सकता है कि वो जो ऑर्थोगोनल का लफ्ज है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूज हो रहा है? Columns of D. Columns of D. What is the relationship between columns of D and columns of D tilde? जो D और D tilde के कॉलम्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है? या मैं उसको जनरलाइज करके पूछता हूँ कि जो है वो एक मैट्रिक्स के कॉलम्स और उसके इनवर्स के कॉलम्स में क्या रिलेशनशिप होता है इन जनरल? बिल्कुल सही बोला था, अभी किसी ने बोला था. आपके सामने लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है, उसको समेशन में खोलें, these columns are orthogonal. ठीक है, तो जो आपके कॉलम्स हैं, मसलन जो डी का पहला कॉलम है
phi 1 is orthogonal to phi 1 tilde. नहीं, phi 1 tilde के साथ नहीं, phi 1 is orthogonal to phi 2, 3 and so on. ठीक है, तभी जाके जब आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है ना आपको इस इक्वेशन के अंदर, उनका इनर प्रोडक्ट ही हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर, वो आपको 0 मिल रहा है. सो phi 1 जो है उस phi tilde, ओके लेट मी रिपीट इट लाइक दिस. डी का जो पहला कॉलम है वो ऑर्थोगोनल है डी टिल्डे के सारे कॉलम से एक्सेप्ट फर्स्ट कॉलम. डी का जो दूसरा कॉलम है वो ऑर्थोगोनल है डी टिल्डे के सारे कॉलम से एक्सेप्ट सेकंड कॉलम एंड सो ऑन. ठीक है, ताकि आपके पास वो आइडेंटिटी आए, वो जो ऑर्थोगोनल पे है वो 1 आते जाएंगे और जो ऊपर वाली चीजें हैं वो 0 आती जाएंगी, अज्यूमिंग के उनकी नॉर्म भी 1 है. So that is from where we get the concept of bi-orthogonality कि आप दो डिक्शनरीज यूज कर रहे हैं, one for synthesis, one for analysis. Neither is orthogonal, but they are bi-orthogonal to each other कि उनके कॉलम्स एक दूसरे के क्या है आपके पास orthogonal है. Okay, so just 2 minutes, let me finish this thing. मैं फिर ये सारी चीज रिपीट करनी पड़ेगी अगले लेक्चर में. How about truncation? If I truncate this D, so if we truncate this D to, let's call it dt, T for truncated, क्योंकि इधर मैं वो tilde यूज कर रहा हूँ, चलो वही मैं hat वाली चीज यूज कर लेता हूँ, D hat. So if D hat is equal to only phi 1 till phi n, but now it is m cross n. ठीक है, and m is larger than n, means each phi I is now coming from r to the power m. Okay, so what will happen? So same thing will happen जो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल डिक्शनरीज में हुआ था. So उधर क्या था, उधर हमारे पास y था, y से हमने y hat बनाया था. ठीक है, सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन किया था y hat और फिर y hat से हमने x hat बनाया था. There was error between y and y hat. यहाँ पे भी ऐसे होगा, आप सबसे पहले y hat बनाएंगे. So y hat will be equal to, so projection, so P matrix into y, P matrix into y. प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, ये प्रोजेक्शन होगा onto range space of D hat. प्रोजेक्शन है कहाँ पे, D hat की रेंज स्पेस के ऊपर, और वो हमें पता है वो क्या होगा, that will be equal to, since D hat is tall, that will be equal to D hat into D hat adjoint. D hat into D hat adjoint, that will be our projection into y. तो इस केस में जो D hat adjoint है, that will again be equal to left inverse of, left pseudo inverse of, sorry, so this will be left pseudo inverse of D hat. So you can write it as, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले था हमारे पास, nothing is going to change, D hat Hermitian, D hat inverse into D hat Hermitian. That is our left pseudo inverse. ठीक है, and on the same lines D hat adjoint जो कि left pseudo inverse है यहाँ पे into D will be equal to identity, but this identity will be now
Same, sorry, n cross n. N cross n identity. ठीक है, so बिल्कुल वही चीज जो वहां पे थी, except this thing, this projection is no more orthogonal projection. It is projection but no more orthogonal projection. This is different type of projection. We call it oblique projection. पिछले केस में orthogonal projection था, इस केस में simple orthogonal projection नहीं है. Everything else is same. So we will stop here. और जो third type of dictionary है, which is overcomplete dictionary, जिस केस में आपके पास जो है, अभी हमने देखा कि ऑर्थोगोनल है, फिर बाई ऑर्थोगोनल है. तीसरे केस में हम एक नई दुनिया में चले जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उस केस में हम कैसे सिंथेसिस और एनालिसिस ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं एंड ट्रंकेशन कैसे कर सकते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर. फिर हम आखिरी टॉपिक पे चले जाएंगे, विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. हाँ जी मोहसिन. सर अगर बायो ऑर्थोगोनल डिक्शनरीज के लिए कंपटीशन रिक्वायर्ड होती है डी इनवर्स की, तो वो मोटिवेशन क्या हुई ऑर्थोगोनल की रिलैक्सेशन करने में? You get much more choices in defining your dictionary. क्योंकि हो सकता है कि there could be a situation जहाँ पे orthogonal dictionaries define करना possible ना रहे. ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी के लिए आपको मसलन दो कॉलम्स हैं और दोनों का डायमेंशन अगर 1000 है, in order to find given one column, in order to find other column, आपको वो जो 1000 एंट्रीज हैं हर एक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि गिवन कॉलम की हर एंट्री के साथ जो है उसका मतलब कि वो 000 है इनर प्रोडक्ट. समझ आ रही है? लेकिन अगर आप बाई ऑर्थोगोनल डिफाइन करनी है तो आपने सिंपल अगर कोई एक एंट्री भी चेंज कर दो, बाकी सारी एंट्रीज वही रखो, दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो डिफाइन करने में आसान है, बट आगे जो है वो कंप्यूटेशन जो है वहां पे आपको दो मैट्रिसेस चाहिए होंगे इंस्टेड ऑफ वन मैट्रिक्स. राइट सर. कोई और सवाल? ओके जी, सो वी स्टॉप हियर. सी यू नेक्स्ट वीक.